55 किलोमीटर इन्होंने इसलिए की है क्योंकि सानू हम drones we have seen the drops at 31 kilometers. Next stage may go to 40, next stage may go to 50. So they have given a 50 kilometer range. So ये leadership करती है. The government of India knows. We share information. Let me tell you, Punjab Intelligence, IB, RAW, NIA, all interchange information. So सानू उन्होंने पता करना है, उन्होंने साना पता करना है. They know everything. That is one of the reasons I think that they have taken the range to 51. These things going under the cameras going under the wire. And I said that normally the posting of a BSF battalion is 2 years. Not only I didn't say that, I went to Delhi and I met Mr. Advani was Home Minister there. And I was saying that you in 2 साल, 1 साल निकालते हो. Because ताकि जब Rangers or BSF are there for a long time, they get to know each other. And they can be collaboration in movement of drugs and all. Drugs the biochemicals. And we should somehow or the other keep this agency अपन ध्यान रखना चाहिए. एक then Mr. Advani ने मैंने चिट्ठी लिखी कि we have looked into this. The cost factor is so much that instead of doing the rotation of a unit every 2 years, we have to 1 year we have to do it 2 years because the cost is too much. Even in the military, we do 2 years. So similarly is the case individually. But BSF is also being done. मैं उनका सहमति से मैं उन्होंने क्या सी कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन इज इम्पोर्टेंट कि तुसी देखो बट देन दैट इज दैट इज Captain John, it's well once you form the party. Captain John, once you form the party, it's well you will. This is it. So it's well once you form the party, you will be aligning with BJP. And over the last few days, I never said aligning with BJP. I said we will have a seat sharing. We want to. I haven't talked to BJP. I haven't talked to Mr. Dean's outfit. I haven't talked to nobody. But what I want to do is, look, I'll use a military term. Concentration of force. I don't know. No, this party has a कांग्रेस पार्टी अभी तक आपने नहीं छोड़ी है. बवंजा साल हो गए कांग्रेस से 10 दिन हो रहा हूँ और तकरीबन कैप्टन साहब आपने किसाना ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਓਗੇ ਪਰ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ 11 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਗਏ 700 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 4.5 साल नहीं है मेरा पिछले नवंबर से शुरू हो गया किसानों का मसला एंड साल हो गया ये उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया किसानों ने कि असी किसी पॉलिटिकल पार्टी को असी अपने इस आंदोलन शामिल नहीं करना चाहते. सो देयरफॉर असी किसी ने भी नहीं नोबडी टच द फार्मिंग कम्युनिटी. मैं कर रहा होम मिनिस्टर का क्योंकि होम मिनिस्टर की और किसानों की गल चल रही है और उन्होंने टीम्स ने दे आर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स विद होम मिनिस्ट्री ने उन्होंने नाल किसानों के नाल तो इतने देयर वी कैन प्ले अ रोल. वी आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन देयर. मैं तुमने दसिया कि मैं 9.5 साल एज होम मिनिस्टर बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो बीन 10 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ पंजाब. 1 साल मैं बरनाला गवर्नमेंट
9.5 साल ਹੁਣ भी मैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री चली है 9.5 साल 10 साल मिले so I know something about the agriculture of the state. It is my subject and I also know security, which is my subject. That is why I am concentrating on this. But I hope that the understanding which with the meeting will have, we are going tomorrow to I will sit after this time meeting for Delhi, and tomorrow we will meet the Home Minister and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ. मैं नंबर 3 बार मिल चुके हैं मिनिस्टर साहब को इस तो कहना on this issue, and I have met the NSA on the security issue. उन्होंने एक बार मेरी मुलाकात या 2 बार हुई है और 3 बार भी, because these are 2 very important things for Punjab. दो सवाल ने पहला ये भी मुख्य मंत्री की कुर्सी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੱਲਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਜੇ 2 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 78 MLA ਵਿੱਚੋਂ 40 MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ये गल देखो प्लीज बी श्योर कि कितने भी ऐसी गल नहीं हुई थी जो मिस्टर रणदीप सुरजेवाला ने कहा सी कि पता नहीं हमारी 70 समथिंग पता नहीं किधर अपना आंकड़े कट के लिया एज फार एज आई एम अवेयर कोई ऐसी गल नहीं हुई समा 76 MLA ने मैंने कहा कि असं हम जब इलेक्शन शुरू करनी है 67 MLA ने कहा कि जब शुरू करनी है उदों असं प्लीज साढ़े वास्ते अब मेरे साढ़े आपके वास्ते रखना. सो दैट वाज द वे. सो ये 43 चैप्टर 60 पता नहीं आपके अंदर कितने फिगर्स होंगे नहीं. देयर आर नो सच फिगर्स दैट आई हैव सीन. नो कोई सर्वे नहीं हुई कुछ नहीं हुआ. ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ सर जो नई कंट्रोवर्सी चल रही है मैडम रूसा को लेके चल रही है. कल ही सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि उनकी जो लड़ाई हो रही थी वो रूसा के कारण ही आपसे शुरू से ही लड़ाई होती आ रही है और यही कारण है कि आज क्या लग रहा है कि पंजाब की राजनीति कृषि कानूनों की बजाय बॉर्डर की बजाय सिर्फ पर्सनल अटैक पे क्यों आ गई? ये उन्होंने पूछो मैंने तो पूछने जी उन्होंने पूछो कैप्टन सर और कोई सुनना नहीं. Captain sir, when are you going to meet Home Minister Amit Shah? Sir, ask him to hear the house about this. Captain sir, Captain sir, ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ? कोई भी वो नहीं है जो मर्जी लिखी जान हो जो सुखजिंदर रंधावा लिख दे जो मर्जी करे. 4 साल तक मेरे नाल कैबिनेट मिनिस्टर उन्होंने नहीं सुनी उस तो पहला नहीं करे सुनी. अरूसा हैज बीन कमिंग हियर फॉर 16 years एंड मैं कल भी क्या सी क्या वीजा का ऊपर रिक्वेस्ट रही है. She is very knowledgeable in her सर टारगेट ही क्यों बनाया जा रहा है? क्या जा रहा है कि पंजाब का पैसा बाहर ट्रांसफर हो गया है? और सब को क्या है गला हो गया है कितों माने अगर माने पैसा ट्रांसफर हुआ 10 कितने हो गए पूरी रास्ते Captain sir, when are you going to meet Home Minister Amit Shah? Did you ask him to clear doubts about BSF's jurisdiction? Because opposition are saying BSF will be deployed at strategic locations, including the Golden Temple complex, the Darbar Sahib, or the Ludhiana Temple. I think this. If this is being said, it is absolutely wrong. My information and my understanding of the situation is
that it is being Punjab police will look after everything. If they require assistance, they will ask for BSF assistance. BSF is not taking over anything in the state. The state will be run by the state government. And this is wrong. This is just an issue being made for the sake of trying to get some brownie points, that's all. ਕਪਤਾਨ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਆਫ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚਲਾਪ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ कि होम मिनिस्टर एज ए सुखजिंदर रंधावा कैपेबल है क्योंकि तुसी भी अपना 9 साल तजर्बा If any home minister says that there is nothing happening in Punjab, he is totally incapable of doing this. सर सेकंड सर अनुषा आलम का पिता है सप्लीमेंट्री है अपना ते सरकार की अनुषा आलम का सर बार-बार ये गल क्यों आ रही है कि इशू नहीं ना को जहां हम क्यों कह रहे हैं अनुषा आलम लेके मैं पूछना चाहता 16 साल में पर्सन इज कमिंग टू दिस कंट्री वो लोग 16 साल चीजें कुछ है नहीं वो क्यों इलेक्शन के टाइम क्यों कैप्टन साहब एक सवाल है जो कोई बंदा नवा काम करता है या कोई नई चीज कर रहा ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ Captain sir, I have two questions. Captain sir, this side. I have two questions. 5 of them minister met Rahul Gandhi. 4 hours of them met Rahul Gandhi last night. And now Rahul is having back-to-back meetings since you announced to launch a new political party. How do you see that? Is there any Congress leader still in touch with you? You think I'm sitting here by myself? Obviously, we have got very many people with us. When the time comes, our party is announced, we will give you this. I can promise you one thing. We will fight all 17 seats. That I can promise you. Whether we go adjustment seats or whether we fight on our own, those are things that time will tell. But yes, we are going to fight and there will be plenty of Congress coming in. We are waiting for the opportune moment. कैप्टन साहब 2 सवाल हैं पहला सवाल लखीमपुर खेड़ी कांड वापरिया ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ There has to be a reason. ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਣਨੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ I want to answer your question. What you say? ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ कैप्टन साहब आपने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि पंजाब सिंह सिद्धू जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा उनको जीतने नहीं दूंगा कल आपका ट्वीट आया है जिसमें आपने ये कहा है कि मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है क्या जितनी में कौन लोग हैं कौन तंग कर रहे हैं I don't want to name names, but yes, there are people in Patiala who have been harassed, and that I will not allow. I've even personally I've spoken to the people concerned and told them they of Patiala. Don't start harassing people. Nobody is stopping anybody, but harassment is not there. No job should be allowed on this. ये पूछा है दुनिया की पूछा है मैं समझा as far as Sidhu is concerned, wherever he fights from, we will fight him. Captain Saab, this is Gurpreet China from Times Now, sir. This is Gurpreet China. Sir, you have already made it very clear that you are going to launch a party. So, just my colleague has already asked you this question that how many Congress leaders are in touch with you? Because we have seen Rahul Gandhi is holding back-to-back meetings. Since you have made this announcement that you are going to launch a party, can you... you answer me. If it's necessary for Rahul Gandhi
Congress. What is the reason? So that means a lot of Congress leaders are already in touch. The people, I think Punjab is very clear about one thing, that the fight, the Congress party doesn't feature in the fight, and I will be kind. Your surveys hasn't been any. It shows that the Adani party is where it was many months ago, because the Bargani issue, the other issues of Jawad K, Vot Kapura, Mehboob Kalam वगैरह सारा और लेकर सरकार है। जैसे टाइम दूसरा कांग्रेस पार्टी है then one of the reason is that ever since Mr. Sidhu came on the scene, our survey shows there's a drop of about 25% in the Congress popularity. Am I correct? General? Okay. कैप्टन साहब इधर इसी तरह मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने कहा कि 31 किलोमीटर 31 किलोमीटर तक ड्रोन अंदर आ गए। परसों जब कलेक्टर सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें होम डिपार्टमेंट ने सुखजिंदर रंधावा ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी उसमें कहा कि 3 किलोमीटर से ज्यादा अभी तक ड्रोन अंदर नहीं आए। एक सर दूसरा इसी के साथ है कि अब जब आप कांग्रेस पार्टी छोड़ के अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं तो आप किसान आंदोलन का क्या सोल्यूशन देख रहे हैं कि सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था कि किसान आंदोलन का क्या सोल्यूशन अब निकलेगा? I can't say कि क्या निकलेगा, but I can only hope that अपने ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਟਸ ਫਿਨਿਸ਼ਡ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ। दैट इज वाई माई मेरे जो 2 बार 3 बार मैं होम मिनिस्टर बन चुके हैं इसी इशू पे कि लेट अस फाइंड अ सोल्यूशन जरा जिहदे नाल एक किसान आंदोलन खत्म हो गए और लोग उठन और अपने घर आ जान। आ देखो कल परसों जी बारिश हुई है कितनी सारी फसलें डुबिया गई हैं। सारे किसान की सोच रहे हैं अपने बड़े उन्होंने नुकसान हो गया। सो दीज आर थिंग्स दैट असीं चाहुंदे हैं। दैट इज वाई असीं ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੇਕਿੰਗ ਸਮ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 25 ਬੰਦੇ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। बड़ी खुशी होती है कि तुसी एक छोटी जी कहावत है बाल हट स्त्री हट ते राज हट। बहुत अच्छी गल है कि डिटरमिनेशन लगे हुए हो। जिस कांग्रेस ने थानू हाई कमांड ने अनसीट किया तुसी उहदे विरुद्ध दे विच तुसी डट गए। बड़ी अच्छी गल। मेरा सवाल यह है कि तुसी जदों 2017 टेक ओवर किया ते रेवेन्यू कमीशन ने गठन किया ओदे रिटायर्ड जज नूं चेयरमैन बनाया साधु साहब। उन्होंने 2 साल मेहनत करके लैंड लीज एग्रीमेंट का एक एक्ट ड्राफ्ट तैयार किया। 31 पेज का ड्राफ्ट का मेरे कोल काफी पेज है। ओदे विच जो किसानों ने हम उत्थे बैठ के सारी एजुकेशन की है वही उस ड्राफ्ट बिल दे विच इनकॉर्पोरेट किया होया कि किसान अपनी जमीन लीज से दे सकता और कॉर्पोरेट दे सकता प्राइवेट पार्टियां दे सकता मिनिमम 1 साल ले मैक्सीमम 15 साल। की थोड़ी मजबूरी रही कि 2 साल की मेहनत तो बाद तैयार किया ड्राफ्ट बिल तुसी अपने असैंबली च पास नहीं करोगे जिहदे विच आ सारा कुछ ट्रेड का और प्राइवेट पार्टियां राही किसान की फसल का खरीदना सारा कुछ उहदे विच शामिल है।
और अगर कोई झगड़ा होंगे किसान और ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ नहीं ये ਜਿਹੜਾ है ना ये जैसे जो टॉक पर सारों कमीशन का सारों कमीशन has done a very good job, but you know जैसे वो रणजीत सिंह कमीशन ने बहुत बढ़िया काम किया सी, but it can't be made law till it is gone through, so it goes through the process. A Sar Commission, Revenue Department will be looking into it, they will come up with the facts, the bill will be made, then it will come. Unfortunately, चीज़ा बड़ी slow चल जाने Same is the case with the Ranjit Singh Commission, the Ranjit Singh Commission के साथ 4 साल हो गए थे साहब हाल ही में बरगाड़ी इशू इंसिडेंटली एक जगह कई मसले के अमरिंदर सिंह वगैरह ने रोके हैं in Bargadi, in Jwarpe, in Bevelkala, in Kotkapura, all the SIT of all. 90 police officers, including Sani and Paramparas, are in the dock. They are being tried now. They are on bail. And 24 civilians are on bail. Only Kotkapura, the High Court has ordered a new SIT that is now undertaken, going into its job. And जब वो होगा, ये ना हो जो चीज़ और होने को भी पड़ सकती है सर एक मिनट सॉरी तुझे कहने से सर नहीं होना नहीं करना नहीं किया सर जो माहौल किसान एजुकेशन ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਜ਼ दैट इज हैप्पी पार्ट शुड खुशी की बात ये है कि ਅਸੀਂ सोच रहे थे एक्चुअली इनिशियली ਅਸੀਂ सोचा ਸੀ 80-90 करोड़ पे पहुंच जाना है 1000 करोड़ बट वी हैव क्रॉस्ड विद 90,000 एंड आई होप 1 लाख करोड़ तक सारी इन्वेस्टमेंट आएगी टॉप क्लास ए क्लास कंपनीज फ्रॉम द कंट्री आर ऑल कमिंग हियर सो आई एम हैप्पी I can't hear you. What do you say? सर नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के सबसे लॉयल चीफ मिनिस्टर रहे आपने पंजाब के इंटरेस्ट को बेच दिया इसीलिए 78 एमएलए जो थे पंजाब कांग्रेस के वो आपके अगेंस्ट हो गए और आप अब बेवजह की बात कर रहे हैं He knows nothing. This fellow talks too much. इनकी आदत कुछ है नहीं और मैं आपको बताता हूँ as far as this not one MLA has ever suggested anything. I have only met the Home Minister and the Prime Minister. What are you talking about my meeting? My meeting with the Prime Minister and the Home Minister is my duty. He is Home Minister and the Prime Minister overall. लेकिन मैं एक बात पूछना चाहूँगा What about Mr. the Finance Minister? He must have met the Indian Finance Minister about 50 times in the last 4 years. What about the Food Minister? When there's a food crop out here, any bar food minister, it's our duty, it's a duty, nobody is doing anything against. General union government and the state governments do not work together, the state cannot move ahead. Und चालू 45,000 करोड़ चाहिए for this paddy crop आ रहे और देगा. It has to come from the Ministry of Finance. So these things are all we are every minister's meeting. When this COVID was at peak, I met the health minister twice to get extra injections for Punjab. So बहुत बड़ा मतलब ये है कि मैं उन्होंने जाके उन्होंने रन किया. मैं करो political सोच की थी about talking to BJP after I was asked to resign from the party and I resigned. I mean resigned from the government. And तब मेरी सोच हुई हाले मेरी gradually BJP का गानी हुई. Leadership not on this issue. Neither of the Italis. I have not talked to Mr. Kinsa. I have not talked to Mr. Amit Shah on the issue of this. But I will. And because it's a very simple thing. When you go into battle, you have to go in force. And when you want in force, one of the things here to general sitting, they know concentration of force is the primary thing, one of the primary priorities in battle. Unless you are strong, you can't fight. And therefore, I want to be strong to fight both the Congress and the Akali and the Aam Aadmi. And I will talk to the foresee adjustments to the BJP and I will also talk to Mr. K.
Siddique Saab, and we will put up a united front to defeat these parties. ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ पंकज कपाई न्यूज़ 18 ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ देखो मेरी कोई जथेबंदियां नाल गलबात नहीं हुई तुसीं अखबार पढ़ी जाते हो कि राजपाल जी नाल मिले ने फ्रंट जदों मिलना नहीं चाहते साडे नाल असीं की कह सकदे उन्हां नूं दे हैव सेड दैट नो पॉलिटिशियन शुड गेट इन्वॉल्वड इन दिस लेकिन ये ਜਿਹੜੀਆਂ ऑफिशियल मीटिंग्स होईयां ने विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसानां दी वो होईयां ने 4 लेकिन ਜਿਹੜੇ what do you call the second ਜਦੋਂ under what is the name given to this सिविल किसान बैक चैनल ਜਿਹੜੀ मीटिंग विद होम मिनिस्ट्री एंड किसान होईयां ने बहुत होईयां ने नहीं हल किਵੇਂ निकलेगा ਤਾਂ विकल्प की नजर आता है कि खेती कानून रद्द ही विकल्प है या कोई और विकल्प भी ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आ रहा है I can't say but I can't ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ meet the home minister let us say what he has to say ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਤ on this issue ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ सर मैं सलीम खन्ना रिपब्लिक टीवी से सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब आपकी सरकार थी जब आप मुख्यमंत्री थे तो जितने भी आपके ऑपोजिशन में लोग खड़े हुए थे आपके मंत्री जो थे चाहे वो सुखी रंधावा हो चाहे नवजोत सिंह सिद्धू बार बार ये बात कह रहे थे कि चाहे वो बरगाड़ी का इशू हो चाहे ड्रग्स का इशू हो कि इनको खत्म करना चाहिए अब 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर सुखी रंधावा के पास है अभी तक कुछ नहीं हुआ क्या कहना चाहेंगे सर इसके साथ साथ It's not law and order सुखी he is the minister of home उन्हें अपने पुलिस से नहीं उन्होंने अपना चलाना है काम and he's got a DGP and he's got everybody else so police is doing his job and home ministers can change chief ministers can change the administration carries on and he is doing his job वो ਦੇ ਵਿੱਚ लेकिन ਜਿਹੜੀ समझ आनी चाहिए ना unless you have some understanding of the situation I have 9.5 years as home minister of Punjab 9.5 साल मैं पंजाब का होम मिनिस्टर है उसके बाद 10 साल में तकरीबन मेरे लिए बैकग्राउंड है मेरी so that is giving me an opportunity and advantage superior एक महीना भी नहीं होया how can you know more than this I have been briefed regularly here is a brief on I get notes like this security scenario and recent recoveries in Punjab this is a paper dated August 2021 what is it I mean you think this is the Punjab police has sent on a mission ये जरा भेजते ने ये मुझे भी दसे होने हुआ था लाइटली टारगेट चला मैं क्या दसिंग लग गया but these are things that we have to be worried about why should the Punjab police like who are the targets here and I not want to mention it सर एक बार होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं कल आप दोबारा होम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं आपने ये ट्वीट किया था कि अगर बीजेपी कृषि कानूनों को रद्द कर देती है तो उनके साथ शीट शेयरिंग की बात होगी आपको क्या लगता है क्या ऐसा फार्मूला है आप जो होम मिनिस्टर के साथ या प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे There is no formulation. There is you can never have a formula. These things evolve during discussions. Discussions होने और उनमें भी तो कुछ बात निकलती है. जल्दी जाना डिस्कस कर देखो उन किसानों का डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुई है on various issues. यदि प्लस हो जाते हैं कि माइनस हो जाते हैं something carries on. एक गला चलतियाँ रहनियाँ ने and something will emerge. Once I am sure जब किसान भी चाहते हैं ये सारा हाल निकले और गवर्नमेंट भी चाहते कि कल हाल निकले कोई ना कोई गल निकली होगी We are not going to conclude एक मिनट असी जान इसलिए नहीं जा रहे कि गल उत्थे जाके मुक जुए कल असी जा रहे हैं दसन मेरे नाल मेरे लोग जा रहे हैं they are all involved in agriculture ट्रेडिंग ताकि जाके उत्थे जाके असी आपको अपने व्यू देंगे कि
भी बात देख लो, आ भी देख लो, इस तरीके से। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਸਲੇ ਮੇਨ ਬਰਗਾੜੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਚਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਂਗੂ ਪੈੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਮੁੱਢੀ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ जिस टाइम बरगाड़ी वगैरह के इशूज ने दे आर नाउ इन कोर्ट। एक बार कोर्ट चाहे और मैं हिंदुस्तान का कानून नहीं चलाता, वो तो जजेस को चलाना पैदा है। वो जो जड़ों कटनगे जो कुछ करेंगे वो आपके जजेस दसेंगे कि कौन गिल्टी है कौन नहीं गिल्टी ऑन दिस इशू। और जो किसानी आंदोलन है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड किसान, वी आर नॉट पार्टी टू। लेकिन मैं अपने तौर पर अब होम मिनिस्टर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ आई कैन हेल्प बिकॉज मैं चीफ मिनिस्टर भी रहे 9.5 साल और मैं एग्रीकल्चर 10 साल का मिनिस्टर है। दोनों मैं 3 लाख कर चुके ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ। एक मिनट नहीं जाना ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ 25 ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ? you and me people who understand ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆੜਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਵਾਂ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ। ਆਈ ਵਾਸ ਰਨ ਅਪ ਬਾਈ वन मिनिस्टर फ्रॉम दिल्ली जिन्हें मैंने कहा कि आप क्यों नहीं रोक रहे? मैं कहा मैं क्यों रोकना, दिस इज नेशनल कैपिटल। अगर किसी को हड़कार है सारा कि असं नेशनल कैपिटल जाके अपना रोज चलाया हुआ पहनावा कर सकते हैं। अगर जाना चाहते हैं तब तो मैं बिल्कुल ही रोकिया सामा सिस्टम में एवरीवे जिन्होंने मौत हो गई उन्होंने फैमिली को हेल्प कर रहे हैं, तो वी आर डूइंग व्हाट वी कैन। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਰਗਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਗਰ ਮਿੰਟੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? मैं दसा टाइम बाउंड 13 साल जब मैं 2007 में सरकार चली और मेरे लिए प्रकाश सिंह बादल ने केस किए थे 13 साल लगे जो मैं कानून चला रहा देश का। हाउ डू आई नो व्हाट हाउ लॉन्ग द जजेस आर गोइंग टू पे? होता सारे केसेस कोर्ट्स के ਵਿੱਚ हैं, जब कोर्ट्स अपना फैसला करेंगे तो आप पता लगेगा। नॉट अनफॉर्चुनेटली नॉट टेक्स इट्स टाइम। मैं कुछ कर कैप्टन साहब ड्रग्स दी कानून ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਕਦੇ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟਸ, ਡਿਸੀਜਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਕੋਰਟਸ। कैप्टन साहब ड्रग्स की सिचुएशन ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ who have written wonderful history books and the representative of the Patiala History State। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ since from the time of Ahmad Shah Abdali to this day ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪੂਲਰ
आपकी सेंटिमेंट है या सिख सेंटिमेंट है, दे हैव बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री. तो हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्ज? I think you're on the wrong side of questioning at the moment. We are talking about one day when you want to discuss this issue, you're welcome to. On your right. Right. ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਏ? मेरे सारे वकील ऑलरेडी दिल्ली में गए हुए हैं. They are on to the election commission. They have handed in a request, and the moment election commission will be back to the customer. I cannot give you any name now because simple ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੋਸ ਉਹ ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਕੱਪੜੇ ਰਹੇ ਕਦੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕੇ. on I have formed an SDF में लाया सी आज तो पता है कितने बंदे ऐसे पकड़े ने एमपी विच नारकोटिक्स विच 65,000 अरेस्ट हुए हैं. आज 43,000 बंदा जेल में बैठा है. किस वास्ते बैठा है? जिन्होंने नशे कर रहे हैं. आज मैं आई नो आई शो यू पिक्चर्स ऑफ पीपल जेडे असि आर्मीनियन वगैरह को काट के लाए हैं. क्या कुछ बोली ना नहीं हुआ ट्रांसपोर्ट ना ट्रांसपोर्ट की केवल माफी the people I brought back from we have got two from Armenia, one from Georgia, we have got one from Rome, we have got one from Greece, and one from Hong Kong has not yet been released. Captain sir, my question is related. You said you will lead force in the battlefield. So are you open to an alliance with Shironi Akali Dal also? I said breakaway. Breakaway means Tiksa Akali Dal and one other Sumandar name. And we did not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There is a difference. Seat adjustment plans. मैं तो जैसा पूरी ने करने से पहले है सर मेरा चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बने हुए है, उन्होंने गवर्नमेंट किस तरह असेस कर रही है? बेटा काम से सीधी है 2 महीने रह गए बने और 2 महीने गवर्नमेंट की कर सकती है. You need time to implement projects and you need time to if I today agree कि मैं बिल्डिंग बनवानी है, by the time it comes up it's 4 years. This is the way governments are unfortunately working. So similarly is the game. जो एक कार्य नहीं आज वही कार्य नहीं जो अभी पास किया हुआ है like लाल डोरा. I am the one who passed it in the cabinet of Lal Gora where all non-owners of buildings or housing within the Lal Gora will be given to them and made their ownership. Similarly, one minute please, one minute. Second thing I said about the in the slum areas of
whoever has a home there, that will be given to him. And that's what, in fact, I am not speaking my middle class councillor. ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਲਮਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਸ ਨੇ we are making them owners, they are giving them ownership. And I can tell you, when I was still in government, I think we had done it in 5 districts. We had done Patiala, we had done Faridkot, we had done some others. It's already been done. All is going on. Now all that work that's going on will take another 2-3 months before it's completed. So all these things have been approved by us in our cabinets. Sir, Captain Saab, You want to say something? Sir, please take my question. from Factory, I just want to ask कि साल हो गए कानून सियासत के विचार तो की लगता है कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ 1969 was my first election ਉਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ तो times have changed, requirements have changed, demands have changed, so very issues we will be putting up our own manifesto committee which will sit out and take it from the काम खड़े हुए हैं उसको लेके आगे जाना हाँ जी कैप्टन साहब सत श्री अकाल सर मैं चंडीगढ़ लाइब्रेरी चैनल को हरदीप कौर ये सर मेरा सवाल है कि सुखदेव सिंह ढींडसा ने ये कहा है कि वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ नहीं करनगे और नाल ही उन्होंने ये कहा है कि कदे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं है सर है कोई इस तरीके की गल कि श्रोमणी अकाली दल संयोग के नाल I have just said for Mr. Kinsa also अगर किंसा ने लड़ाई लड़नी है ना सीरियसली अब एक सीट जितनी है दो सीट जितनी है बदली बदलनी there is a thing called with generals as I was saying called concentration of force. What does it mean? It means I will put it over 500 and I need at least 1,000 to defeat you. So concentrate. So when we get our force together, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ and ਬੀਜੇਪੀ ਆਈਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ विमल साहब विमल साहब विमल साहब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀਆਂ ਇੱਕ ਐਸਪੀਐਮ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ इन्होंने आपके लाइनों को आगे और जाते जाते कैप्टन साहब we have no objection to anything the government has no objection अगर ये चीज है मेरी गाएंगे या गाएंगे सर वो खुलने नहीं देती एडवोकेट आज एडवोकेट जनरल doesn't decide the court decides कैप्टन साहब इसी के एड ऑन लगता है पंजाब नशा मुक्त हो गया कैप्टन साहब लगता है पंजाब नशा मुक्त हो गया कैप्टन साहब मेरे सवाल से पहले बंद करवा रहा गलत है ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆંકੜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਪਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I
can tell you off the record. I mean, not off the record, but without documents. सेशन से जाओगे Bars in the last couple of years, bars for license, nearly 1,000 prisoners, nearly 200 grades, nearly 150 kilos of RDX, and now more dangerous thing is different boxes, but different boxes. Only which they have got RDX and they have got a triple switch mechanism. कैप्टन साहब सेशन में जाओगे One last question. Why can't let me answer? Let me answer, please. कैप्टन साहब Different bag boxes with RDX and there is a triple switch mechanism. अगर एक फेल हो गई, second takes over, third takes over. Who takes different boxes to school? बच्चे. School वाले Pakistan doesn't care. And I think these are the progress in My point of saying this is that we are concerned. So अगर उन्होंने करनी है अपने एरिया में शौक ना कलर उन्हें विधानसभा में, पर सारे आंकड़े